So practical number 2A. Okay. Exactly, this is the practical. This So practical number 2A. ये फाइल आपको दी जाई होगी. The aim according to our syllabus is this: divide your screen into 4 regions. Okay, and एक region में circle draw करो, एक region में rectangle draw करो, एक region में eclipse draw करो, and फिर half eclipse draw करो in each region with an appropriate message. Appropriate message हम भूल गए हैं. Okay, but yes, we can surely specify it. This so that is the part that we'll be seeing. So yeah, we have to draw this particular part that is required. We have to divide this into the screen, and then we will have to implement this further. So अभी हम करें तो ये कैसे करें? If you notice, यहाँ पे उन्होंने formulas दिए हैं. Formulas is mid x plus minus 150, mid y minus 120, and all this kind of things will be seen right here, and that has to be a part of this. So that is how it's shown. But normally I don't suggest students to do this, because इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. Okay, इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं. Rather, I have a different approach to this particular part. That is, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स क्या है ये समझना जरूरी है. ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या है ये समझ लो, एंड उसके हिसाब से करो. अभी प्रैक्टिकल 1.2 में, क्योंकि अगर आप हर चीज के लिए ऐसे मिड एक्स एंड मिड वाई के ऊपर माइनस एंड प्लस करते रहे, there is a point in doing this. You can do it quite easily, but it increases the amount of calculation that you're doing, and students end up making mistakes. So first, let's see the easy way of doing this and puts that easy way into your mind, so that अगर practical exam होता भी है तो आपको किसी भी मीन से ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको ये पाथ जो है वो पता होना चाहिए कि how you do implement it. Once you understand the concepts of this, it is easy to implement in this plus and minus way how they have done it. So उन्होंने just 8 point लिया है mid x and mid y, और उसके हिसाब से, क्योंकि that is the dividing factor basically, सो उसके हिसाब से उन्होंने आगे का पार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया है. दे आर ड्रॉइंग द फॉर द पार्ट व्हिच इज देयर. सो विल कीप दिस एज अ पर्टिकुलर रेफरेंस, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द पार्ट दैट वी हैव, दैट इज द पार्ट. सो सबसे पहले द टास्क इज, हमको 4 रीजन में डिवाइड करना है. सो 4 रीजन में हमने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है. that is this particular code is implemented. But if you notice right here, मैंने इस particular practical 1.2 में भी maximum size नहीं ली थी. maximum size की जगह पे मैंने 640 and 480 डाला था. So let's try to see if what happens when we put 640 and 480, because that will help you all further in your practical part. So यहाँ पर हम डालते हैं. I'll just put this as comments. So यहाँ पे जहाँ पे max y है, max y they are saying the size is 480, और जहाँ पर max x the size they will say is basically 640. So let's see this if this is successful enough. Not sure. Okay, it's the same thing that happens. So maximum size is 640 by 480. Okay, of x axis and y axis. So आप वो directly वो भी values use कर सकते हो, but ये values आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. ये values आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी.
Okay, so with this we do the equalization part, that is हमको जो इसका पार्ट है वो मिल जाता है. अभी हम लेट्स कंसिडर हमारा जो ये पहला पार्ट है. ओके, ये जो पहला पार्ट है. ओके, इन द फर्स्ट पार्ट we will be drawing a circle. Let's draw a circle in the first part. उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, हाफ इक्लिप्स निकालना है, सर्कल निकालना है, एंड सो ऑन. बट सबसे पहले एक one by one, let's go one by one and let's decide to draw a circle. So circle निकालते हैं. So उसके लिए हम let's get back to our particular function. So over here practical 2a, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज कर लिए हैं and they're using this. So practical 2a, the very first part will remove circle, next part में rectangle and so on. So यहाँ पर हमारा ये part है. अभी हमारा ये स्क्रीन है. इसको हमने ऑलरेडी हमारे लॉजिक से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया है. This is your x-axis, this is your y-axis, both begin right here from 0,0. x की मैक्सिमम साइज बोली जाती है 640 एंड y की मैक्सिमम साइज बोली गई है 480, राइट. एंड दिस रिमेन्स टू बी योर मिड एक्स. ओके, ये आपका पॉइंट है मिड एक्स. Okay, and yeah, this 2 will be something called as mid x, comma 480, and this will be mid x comma 0, that is nothing but your y-axis, and this will be your 0 comma mid y, and this will be your 640, that is max x minus minus, I'm saying comma mid y. Okay, so this will be our values. Now in this particular area, we have to draw something called as a circle. Okay, something called as a circle. ये हमको ड्रॉ करना है. Okay, so we have to draw something called as a circle. सर्कल के लिए हमको क्या सिंटेक्स है? सर्कल का हमारा सिंटेक्स देखो क्या होने वाला है. ये हम हमारे फंक्शंस हैं यहाँ पर. Okay, so functions में सर्कल ढूंढते हैं. Once we come to something called as circle, सर्कल का सिंपल फंक्शन है, हमको इसको सेंटर पॉइंट हमको देना है. Okay, x and y center point we have to give, and we have to give just the radius. So x and y center point and the radius. So we have to just specify this particular x and y. इस x and y point की हमको जरूरत है. ओके, सो अभी ये x and y पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो? So सबसे पहले बात करते हैं x की. So सबसे पहले बात करते हैं हमारे x पॉइंट की. ओके, यहाँ पे हम x की बात करेंगे और यहाँ पर हम y की बात करेंगे. So ये हुआ आपका x axis. Okay, this is your so-called x-axis. So you can say that this is the point x-axis. Okay, x-axis पे. So ये x-axis का point हमको find out करना जरूरी है. और ये हुआ आपका so-called y-axis. So ये y-axis का point हमको find out करना जरूरी है. आपको पता है यहाँ पर जब हम आते हैं, that is nothing but your mid x, that is nothing but maximum size of x divided by so-called 2 gives us mid x. So ये जो है, ये पॉइंट जो है वो mid x से छोटा है, मतलब 0 to mid x के बीच में है. This is between 0 to mid x. So I can say this mid x minus 40, mid x minus 50 can get me this particular point called as x.
So I can say this that चलो अगर मैं consider कर लूँ तो I can say that mid x I can take the point as mid x minus, let's assume 100. Okay, mid x minus 100 can give me this particular x point. And in the same way, अगर ये आपका यहाँ पर मिड वाई है, राइट, ये आपका यहाँ पर मिड वाई है, सो मिड वाई minus 50 or mid y minus 100 can give me this particular point. That is, चलो लेते हैं mid y minus 75, क्योंकि x axis y axis normally 480 इसकी मैक्सिमम साइज है, थोड़ा सा छोटा होता है y axis, तो रेशियो जो है वो x axis और y axis का मेंटेन करना पड़ता है. So mid y minus 75 can give us your y-axis point. So यहाँ पे हम दोनों पॉइंट हमको मिल जाएंगे. That is nothing but 8 point होगा आपका mid x minus so called 100. So that will be our first point, and the next point will be mid y minus 75. With that we get the x and y coordinate, that is the center, and then we will just use the radius. Radius हम जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, ले लेते हैं 10, 15, 50, whatever we want, we can take it, and that's how we can implement it. So that is something that we can do right here for finding our coordinates. And the same thing, if you notice, हमारा जो ये program है, यहाँ पर भी let's consider this particular part, that is nothing but your so called circle. Okay, so ये circle की आपकी statement है यहाँ पर. Okay, I'll just get it right here. हमको सर्कल निकालना है अभी. सो सर्कल की ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है. सो ये हमारे सेंटर है एक्स एंड वाई, एंड ये आपका रेडियस है. ओके, सो एक्स एंड वाई देखो कैसे दिया है. आप जस्ट डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ये कुछ ऐसा यूज करना जरूरी ऐसा नहीं है. जस्ट -150 वी कैन पुट इट, एंड यहाँ पे -120 है. दिस पार्ट इज हिट एंड ट्रायल. दिस पार्ट इज हिट एंड ट्रायल. आई कैन गारंटी यू कि आपको यही लेना चाहिए. आप वो परफॉर्म करके वहां पे देखना, आप वो परफॉर्म करके वहां पे देखना, और वहां पे आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जो एडजस्ट करना है. सो लेट्स गेट बैक टू आवर टर्बो सी एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस पार्ट. अभी हमको सिंटेक्स तो पता है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, और लॉजिक भी पता है. सो यहाँ पर हम आएंगे. Now, very first part, we have to draw the circle. So let's take circle. I'm not setting the color and everything for now. वो बाद में देख लेते हैं. Okay, color is not that important. First, our main part is important. उसके लिए just एक function है set color जो use करके आप implement कर सकते हो. So not a big deal. So circle. So circle के लिए सबसे पहले x and y, और वो x and y is nothing but the center of the circle. और उसके लिए हमने find out किया था हमारा mid x जो होने वाला है, ब्रैकेट में लिया है उन्होंने, दैट इज माइनस, लेट्स टेक 100 लिया था हमने, तो हम 100 ही ले लेते हैं. फिर आता है आपका मिड वाई, दैट इज फॉर योर वाई कोऑर्डिनेट. ओके, वाई एक्सिस उन्होंने ब्रैकेट में लिया था समथिंग कॉल्ड एज सॉरी तो प्लस साइन डालनी पड़ेगी. Why can't I delete it directly? But let's take it directly. I want to take this directly and see what happens. So mid y minus 75 we had taken, so we'll keep it to be 75. Okay, and then comma ले लेते हैं, और हमको रेडियस देना है, so रेडियस ले लेते हैं चलो 30 and semicolon. So let's see what happens. If I'm wrong somewhere, I'll just come to know. 0 errors. So run. Here is my circle rightly in that particular area. So that is the part. So यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट्स वगैरह दिए हैं, वो यूज करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपके सामने आपको करके दिखाया. I used it without brackets,
and it was completely fine. It is just basic mathematics. I don't know why they chose using brackets and confusing students with that particular part. So शायद वो प्रोग्राम कहीं पे ऑनलाइन होगा, वहां से ही स्टूडेंट्स ने लिया होगा, बिकॉज ये जो प्रोग्राम्स है शुरुआत में ये मैंने इसका लॉजिक समझाया था स्टूडेंट्स को, एंड दे हैड इम्प्लीमेंटेड द बैच विच वाज देयर, दे हैड इम्प्लीमेंटेड इट ऑन देयर ओन. सो डोंट नो व्हाई दे हैव डन दैट. माइट भी कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा ऐसा कुछ, सो उसकी वजह से उन्होंने किया होगा, या फिर डोंट नो, दे माइट हैव टेकन इट ऑनलाइन आल्सो बिकॉज आई जस्ट टोल्ड देम. बट ऐसे प्रोग्राम शायद ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. So that is the part. So yeah, with this, let's go ahead to the next part. So सर्कल को ड्रॉ कर लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमको बोला है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. Okay, so we can draw the rectangle and so on. So we have to draw the rectangle and see how it basically works. So the same concepts can be implemented right in there. या फिर कुछ students directly जो है वो coordinates भी use करते हैं. अभी आप directly coordinates कैसे use करोगे? Directly coordinates भी use करने का option है, या फिर आप you can just do another part. So just let's try with this particular part itself. हम जो whatever we are doing, we'll do it the same particular way. Now we have to draw a rectangle in the next corner. That is, यहाँ पर हमको अभी rectangle draw करना है. So सबसे पहले rectangle का function क्या है वो check कर लेते हैं. Rectangle का function right here, it's there. Okay, so rectangle function के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए. दैट इज यहाँ पे हमको 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. दैट इज 4 पॉइंट्स की जरूरत है. 4 पॉइंट्स आर बेसिकली, फर्स्ट इज ओके, यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट एंड टॉप. सो दिस 4 पॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड, बट एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. This is 2 points, but I guess they have depicted it wrongly right here. No problem. I'll just tell you all what is required for a rectangle. सबसे पहले हमको rectangle निकालना है इस बार. So rectangle के लिए हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. One is the left top, okay, one is the left top and one is the right bottom. Okay, so the left top and the right bottom. So this 2 points की coordinates हमको find out करनी है. ओके अब ये 2 पॉइंट हम डालेंगे कहां पर? हम इसको डालेंगे कहीं पे यहां पर. ओके सो ऐसा हमको रेक्टेंगल निकालना है. सो अभी ये एक्स एक्सिस, ओके, और ये होगी आपकी वाई एक्सिस. आई एम ड्राइंग इट राइट हियर बिकॉज ऑलरेडी इस साइड पे सर्कल है. सो जस्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड फिर ये आपका यहाँ पर कुछ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर कुछ ऐसे आने वाला है. ओके सो दिस इज ऑन वाई एक्सिस. ये पार्ट आपका होने वाला है वाई एक्सिस के ऊपर. ओके एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ऐसा आने वाला है. ओके यहाँ से ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए. सो this is going to be your point on x axis and y axis. So सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं. So ये है आपकी so called x axis. So ये जो पॉइंट आता है, this point on x axis right here, this particular coordinate which is there, it is somewhere in between mid x and the last max y. Okay, it is somewhere in between mid x and max y, that is nothing but 640. So can I say this, that my x point right here can be mid x plus something? Yes, I can say this. It can be mid x plus something. Let's take it to be, चलो 25 ले लेते हैं. So पहले इसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. Okay, it is something mid x plus 25.
अभी अगले केस पे देखते हैं। अगले केस में आप या तो बोल सकते हो डायरेक्टली कुछ ले सकते हो, दैट इज वाई। ओके, यहाँ का वाई हम फाइंड आउट करेंगे, दिस फर्स्ट पॉइंट्स वाई। सो वाई फाइंड आउट करने के लिए यू कैन गो इन रेफरेंस टू जीरो। वी बिगिन फ्रॉम यर, हम ऐसे जाने वाले वाई एक्सिस के ऊपर, सो हम जीरो से बिगिन करेंगे। सो वी कैन गो फ्रॉम जीरो टू मिड वाई, यहाँ पर मिड वाई आने वाला है आपका। ओके, वी कैन गो फ्रॉम जीरो टू मिड वाई, या फिर मिड वाई माइनस समथिंग, या फिर मिड वाई माइनस समथिंग। So you can choose any which way which you want. You can have 0 plus something, or you can have mid y minus something. So let's take it 0 plus something. So अगर 0 plus something हमको लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं. We can take it 0 plus 50, 0 plus 25, anything. So we'll just take 0 plus चलो ले लेते 35, 0 plus 35, which is nothing but 35. So आप वहां पे डायरेक्टली जो है वो 35 डाल सकते हो. ओके, जस्ट एक बोला मैंने, आप रेफरेंस कहीं से भी ले लो, सेंटर से ले लो, मतलब सेंटर ऑफ वाई से ले लो, दैट इज मिड वाई से ले लो. फिर सेंटर ऑफ वाई से ले लो तो ऊपर का पार्ट है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा. सो मिड वाई माइनस समथिंग, या फिर जीरो से अगर रेफरेंस लेना है तो जीरो प्लस समथिंग. सो जीरो प्लस एनीथिंग इज नथिंग बट दैट सेम वैल्यू, सो इट विल बी डायरेक्टली 35, विच यू कैन टेक डायरेक्टली. सो ये होंगे हमारे पहले पॉइंट्स एक्स एंड वाई के. अभी हमारा ये पॉइंट करना है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज देयर. सो उसके लिए अभी हमको चाहिए हमारा एक्स, और इसके लिए अभी हमको चाहिए हमारा वाई. सो यहाँ पर भी सेम, या तो मैक्स से रेफरेंस ले लो या फिर मिड एक्स से रेफरेंस ले लो. मिड एक्स से ही लेते हैं. यहाँ पे हमने प्लस 75 किया था. सो अभी हम सॉरी प्लस 25 किया था यहाँ पे. ओके, पहले पॉइंट के लिए फर्स्ट 25 किया था. सो यहाँ पे हम मिड एक्स प्लस 100 कर दे तो. सो लेट्स डू इट मिड एक्स प्लस 100. सो मिड एक्स जो भी होगा प्लस 25 विल बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एंड फिर यहाँ पर आने के बाद मिड एक्स प्लस 100 विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ योर सो कॉल्ड रेक्टेंगल, और दैट विल बी द पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल. फिर हम y के लिए यहाँ पे द सेम लॉजिक, आप जीरो से रेफरेंस ले लो. ओके, आप जीरो से रेफरेंस ले सकते हो या आप मिड वाई से रेफरेंस ले सकते हो. ओके, जस्ट वो रेक्टेंगल बनना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, कि वो रेक्टेंगल जो है वो बनना चाहिए. सो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल के लिए पार्ट लिया था. सो यहाँ पे हमने 35 लिया था. ओके, 0 plus 35. So now we have supposed to go down, right, something like this. Okay, यहाँ पे हमको जाना है और ये पार्ट हमको फाइंड आउट करना है. सो ये गैपिंग कितना देना चाहते हैं हम, वो मैटर करते हैं. हमने 35 लिया था, 35 के आगे जीरो से ही रेफरेंस ले लेते हैं, 0 प्लस समथिंग. 0 प्लस 35 लिया था. अभी रेक्टेंगल है, 0 प्लस 25 नहीं कर सकते, अब छोटा हो जाएगा. हम आगे बढ़ते उससे, और थोड़ा सा आगे जाके हम समवेयर लेट्स गो अप टिल समथिंग कॉल्ड एज 65. सो लेट्स टेक दिस वैल्यू ऑफ 65 and let's see what outcome we get for this. So let's go back and put the values. तो हमको अभी रेक्टेंगल का फंक्शन लिखना है. सो रेक्टेंगल के लिए विल बी ड्रॉइंग फर्स्ट 2 पॉइंट्स. रेक्टेंगल लेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमने डिसाइड किया था क्या लेंगे, इट्स यहाँ पर हमारा पॉइंट है. सो मिड एक्स प्लस 25 लेने वाले हैं. हम यहाँ पे लेने वाले हैं मिड एक्स plus 25, that will be our x. Okay, and comma, let's take it directly, हमने 35 लिया था, so हम directly यहाँ पे 35 लेंगे. Okay, फिर again comma. Now again we have given the reference from mid x, so mid x plus 100. Okay, comma. Okay, और directly हमने value दी थी, that was nothing but your so called 65. So let's take something called as 65 right here. Okay, and that will be it. So this is something that we'll be implementing. So let's get back in Turbo C and let's try to implement right here.
So we have something called as rectangle. So first point was minutes plus your so-called value हमने कुछ ली थी, मुझे भी याद नहीं, minutes plus 75 या 100 लिया था कुछ हमने. So minutes plus something and then comma. We had taken 35. So 25 लिया था this. So minutes plus 25. So comma 35 comma minutes plus 100 we had taken. Minutes plus 100 comma something called as 65. 65. Yes. So this is the part that we have done. So I'll just go and save this. Let's see if this particular part does work. We click on compile. Okay. Then run. So here it comes. बहुत क्लोज आया है. आप वैल्यूज इंक्रीज कर लो, आपको पार्ट मिल जाएगा. सो इट्स वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस. बट आर एम इज बेसिकली, उन्होंने यही कहा है, ऐसा कुछ मेंटेन करने को तो नहीं बोला है कि हमको मिडल में ही चाहिए ऐसा कुछ. दे हैव टोल्ड दैट इन दैट पर्टिकुलर एरिया यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड अ रेक्टेंगल कम्स इनटू दैट एरिया. So that is the part which we can do right here in this particular example. So आप just यहाँ पर as I said, just play with this coordinates. यहाँ पर अगर मैं बढ़ा दूं इसको, I put it to be 50, I can make it like, okay, I can do it 100 right here and I'll make it 200 right here. So let's see what happens. So यहाँ पे हम 200 करते हैं. The same यहाँ पे हम values बढ़ा देते हैं. यहाँ पे 75 कर देते हैं and here we'll go somewhere around 125. चलो. Okay, so we can do this part. So let's see what is the outcome for the same. It might be a little bit bigger, might be, and yeah. So यहाँ पर move हो चुका है वो. So it's just about playing with the coordinates, how we are playing with it. एंड हमको उस पर्टिकुलर एरिया में करना है, इसलिए हम वो रेफरेंस ले रहे हैं जिस चीज का, दैट इज मिड एक्स एंड मिड वाई का हम रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको वी आर डिवाइडिंग द स्क्रीन इनटू 4 पार्ट्स एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज इन दोज इंडिविजुअल एरियाज बिकॉज दैट इज आवर सो कॉल्ड एम दैट हैज बीन गिवन. We have to use the brains in the same way, so that is something that is required to be done, and you have to do this. Now the next two parts are also there, जहां पर हम देखने वाले हैं द अनदर टू एरियाज. एक जगह पे शायद इक्लिप्स दिया है एंड दूसरी जगह पे हाफ इक्लिप्स दिया है. सो दैट इज द अनदर पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. वेल, आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे. No, I guess 5 more minutes are there. So let's begin with it. देखते हैं कितना कंप्लीट होता है. आगे का पार्ट हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे. एंड आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम. दिस इज इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स है. आगे का प्रैक्टिकल आपको बोर होगा जब एल्गोरिथम्स चालू हो जाएंगे, तो ये ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये आप सी में इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो, बट आजकल ग्राफिक लाइब्रेरी हर एक लैंग्वेजेस में होती है. सो अगर आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाना भी चाहते हो विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ड्रॉ वेक्टर्स, उतना एडवांस नहीं, बट उतनी एडवांस में सी में आई विल नॉट think about it right now, because making an illustrator has some another level, but making an illustrator or Photoshop, but yeah, basic softwares like Paint can be thought about making in this particular part. और उसके लिए आप inbuilt graphics library की use करके आगे का part जो है वो बना सकते हो. So that is something that we can do. So yeah, the next part that we implement as per the requirement is nothing but your eclipse. Okay, eclipse भी देखा था हमने last time, और eclipse का भी function यहाँ पर mentioned है. Okay, so eclipse, let's find where is eclipse. Here is our so-called eclipse. eclipse का एक पार्ट है जहां पर यहाँ पर भी हमको पार्ट रहता है. मैंने आपको बताया था ये पार्ट, that is दो रेडियस होंगे यहाँ पर इक्लिप्स के लिए. We had discussed this particular part. There are going to be two radius, and there is something called as start angle and end angle, जो आप स्पेसिफाई करते हो. ओके, जो स्पेसिफाई किया जाता है हाफ इक्लिप्स ड्रॉ करने के लिए. एक्चुअली इसकी जो जरूरत होती है वो उस चीज जरूरत है. But for now, the start angle and end angle, if we want to draw a complete eclipse, if you notice ये line है, I'll try to highlight this.
हाईलाइट करने के लिए ये मेरे को करने नहीं देता है, ठीक है। No, okay, nothing can be edited right here. So yeah, so ये जो part है, that is, if you notice यहाँ पे mention है, if the start angle is 0 and end angle is 360, the call to eclipse to draws a complete eclipse. So we have to just, if you want to draw a full eclipse, we have to mention the start angle as 0 and end angle as 360. If you want to draw half eclipse, you can start from anywhere, like you can take 0 to 180, or you can take 180 to 360. It will give us something called as half eclipse. सो या फिर 90 टू समथिंग भी जा सकता है, वो मिडल वैल्यू मुझे याद नहीं है, बट 0 to 180 और 180 to 360 can give us something called as half eclipse. So for full eclipse, it is full circle, that is 0 to 360 will be required. Okay, so that is the start angle and end angle. Apart from that, the another values that are required are nothing but your so called previous part में यहाँ पर है, हमको दो रेडियस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इक्लिप्स है तो वो सर्कल के जैसा नहीं है, वो एक साइड से उसका रेडियस ज्यादा होता है, एक साइड से उसका रेडियस कम होता है। सो एक्स रेडियस एंड वाई रेडियस बोथ नीड्स टू बी गिवन। सो ऑल दिस पैरामीटर्स बेसिकली कैन बी एग्जिस्टेड, बट ये सर्कल के जैसा ही है, उसके लिए एक ही पॉइंट की जरूरत है, दैट इज ये एक्स एंड वाई। okay, the first x and y will be required. So let's go ahead and see how we are supposed to implement this particular part, and see how we can do this particular part. तो इस एरिया में हम इक्लिप्स निकालेंगे। सो एरिया हमारी कहां पर है, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया। सो ये हमारा इक्लिप्स है। हम यहाँ पे सिर्फ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ध्यान देंगे। सो ये हमारा सेंटर पॉइंट हमको निकालना है। तो सेंटर पॉइंट देखो कहाँ पर कैसे है, आने वाला है। ये आपका सेंटर पॉइंट, ये आपका मिड वाई है यहाँ पर। सो हमको एक्स निकालना है और वाई निकालना है। ओके, सो एक्स तो चलो रेफरेंस दो ही रह सकते हैं, एक तो है मिड एक्स, हम मिड एक्स ले सकते हैं, ओके मिड एक्स, या फिर जीरो ले सकते हैं। इस केस में हम एक्स तो जीरो से लेते हैं, हमारा काम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। सो जीरो प्लस समथिंग, सो जीरो प्लस एनीथिंग इज दैट पर्टिकुलर नंबर। सो लेट्स टेक इट 0 + 100। सो एक्स की वैल्यू हम 100 ले लेंगे। अभी मिड वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो मिड वाई के आगे आना चाहिए, मतलब जीरो टू मिड वाई एंड मिड वाई टू मैक्स वाई। ओके, मिड वाई टू मैक्स वाई के बीच में आना चाहिए। सो या तो आप मिड वाई को रेफरेंस ले सकते हो, या तो हम मैक्स वाई को रेफरेंस ले सकते हैं। मैक्स वाई को लेते हैं तो मैक्स वाई माइनस सम वैल्यू विल गिव अस वाई वैल्यू, एंड अगर मिड वाई लेते हैं तो मिड वाई प्लस समथिंग विल गिव अस द वाई वैल्यू। we were following the plus mechanism, so let's follow the plus mechanism itself for now. So mid y something, mid y plus something, so mid y, let's take it to be mid y plus 25, or might be mid y plus 50. So mid y plus 50 will be nothing but your new y value, और x को हम directly zero के reference से ले रहे हैं, because it is in this particular area. Okay, in this particular area में वो आ रहा है, इस area में आ रहा है। So इस वजह से हम x को जो है वो माइनस में भी ले सकते हो आप, नॉट एन इशू। जैसे कि यहाँ पर लिया था हमने, वी कैन टेक इट टू बी मिड वाई -100, ये भी ले सकते हैं। मिड वाई -100 भी ले सकते हो, मिड वाई मिड एक्स -100 भी ले सकते हो, नॉट एन इशू। आप जो चाहिए, आपको जो रेफरेंस चाहिए, आपको जीरो से रेफरेंस करना है या मिड एक्स से रेफरेंस करना है, मिड वाई से रेफरेंस करना है, वो आपके ऊपर है। दैट आई लिव इट अप टू यू, आई एम जस्ट टेकिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो चलो लेट्स टेक इट मिड एक्स -100 एंड मिड वाई +50. So that is the point, and we can implement it in this particular fashion. उसके अलावा हमारे पास होगा start angle and end angle, which was remaining, and ये हमारा representation कुछ ऐसा था right here, and इस representation के हिसाब से in one block we are going to remove the eclipse, and another block we are going to remove the half eclipse. Okay, so one block we have to remove the eclipse and another block we have to remove the half eclipse. So हमने कुछ points discuss किए थे, I hope you all remember those points. That is nothing but your mid y
Okay, this was your mid y right here. ये भी आपका mid y हो जाता है. Okay, 0 comma mid y and so on. So कुछ ऐसे पॉइंट्स थे एंड ये आपका मिड एक्स है. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स वी आर सपोज टू टेक थिंग्स. सो यहाँ पे हमको एक्लिप्स के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, एक्लिप्स के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था, दैट वाज बेसिकली दिस. Okay, this is the formula of eclipse that we have. सो एक्लिप्स के हिसाब से, इसके हिसाब से हमको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देने हैं. फर्स्ट इज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. सो बीच का एक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देना है, फिर एक स्टार्ट एंगल देना है, फिर एक एंड एंगल देना है, फिर एक्स रेडियस एंड वाई रेडियस. रेडियस अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड रेडियस अकॉर्डिंग टू y axis. So this is something that these are the values that we need to specify. So over here, when we talk about this, we have eclipse, which eclipse का जो ये फॉर्मूला है उसके अंदर हमको we have to give certain values. One is your x coordinate first, then your y coordinate, then your start angle, then your end angle, then there is the another part that we have, that is your x radius and y radius. This is the part we have to give. So इसके हिसाब से ये जो डेटा हमारे पास है, इसके हिसाब से x and y coordinate are the center part. Okay, this will be your x and y. Then start angle. Start angle is according to your circle. So it is, अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं eclipse, तो आप कह सकते हो 0 यहाँ पर है और 180 यहाँ पर है. I don't know what is the start and end, but yes, that is the start and end. So half eclipse के लिए हमको 0 to 180 लगने वाला है. फिर अगर full eclipse चाहिए ऐसा, तो it will be 0 to 360 degree. So 0 to 360 degree हम start and end angle में mention करेंगे for full eclipse. And half eclipse के लिए हम 0 to 180 degree जो है वो mention करने वाले हैं. So that is it. And x and y radius, आपको पता है eclipse होता है तो eclipse कुछ ऐसा दिखता है. Okay, so उसका x radius जो है वो अलग होता है और y radius जो है वो अलग होता है. So this radius whatever we want and this radius whatever we want, we have to specify it. So that is the part that we require. But what should be our x and y? What matters at this moment is what should be our x and y. So उसके लिए हमने जो कैलकुलेशन किया था, मैंने आपको बोला था हम रेफरेंसेस लेंगे, दैट इज नथिंग बट योर मिड एक्स एंड मिड वाई का. सो एक्स ये आपका मिड एक्स है. ओके, ये आपका मिड एक्स है. मिड एक्स माइनस 100 will be our so called x, and then for mid y के अभी ये mid y है. So अभी हमको ये eclipse आगे निकालना है mid y के. So mid y plus 50 will be our so called part of x and y. अभी यहाँ पर भी आपको x and y चाहिए, यहाँ पर भी आपको x and y चाहिए. So यहाँ पे x क्या होगा और y क्या होगा, यहाँ पे भी पॉइंट लेना जरूरी है. So यहाँ पे देखते हैं, ये आपका मिड एक्स है. ओके, ये आपका मिड एक्स है. ओके, मिड एक्स के आगे का पार्ट है. सो यू कैन से दिस मिड एक्स प्लस 50 और 100, आप जो भी ट्राई करना चाहते हो कर लो. लेट्स पुट इट मिड एक्स प्लस 100 या 50 भी ले सकते हो, हिट एंड ट्रायल है. ओके, फिर यहाँ पर भी सेम, ये मिड वाई के आगे है, दिस इज योर मिड वाई. ओके, दिस इज योर मिड वाई. सो ये मिड वाई के आगे है, आगे है. सो यहाँ पर भी सेम आएगा, मिड वाई प्लस 100 या 50 ले लो. ओके, वाई की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, दैट्स द रीजन आई कीप इट 50. वी डोंट हैव बिगर स्पेस फॉर वाई. वर्टिकली हमको रहे हैं तो वर्टिकली हमको जरा कम स्पेस मिलती है, दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग इट टू बी 50. So these are the values we shall use mainly for our particular part of x and y. So that is something. Let's try that particular part and see how it works on our Turbo C. Okay, going ahead.
Go into your Turbo C now. So here are we. So first, let's draw the eclipse. So eclipse in bracket. सबसे पहले x and y values. So हमने जो x and y values eclipse के लिए डिसाइड की थी, that was mid x minus 100 comma mid y plus 50. Okay, so these are our x and y. Now we have to specify something called as the start angle and end angle. So 0 comma 360, as we want the whole particular हमको पूरा पूरा eclipse चाहिए इसके लिए. So 0 to 360 will be a start angle and end angle, and then we have something called as the next part जो हमको specify करना है eclipse के लिए, that is the x radius and y radius. So x radius के हिसाब से let's take the radius as let's take it to be somewhere around 60. Okay, comma y radius, that is nothing but let's take it to be your so-called 40. Okay, so here we go. So this is our eclipse part. So let's go and save this. Click on compile, 0 errors. So I'll just go and run this part. So here comes our so-called eclipse. So it's rightfully on the borderline. Yeah, but it's there. So that's the part that we have. So now let's go for something called as half eclipse and see how does half eclipse work. So again, हाफ इक्लिप्स के लिए भी हम इक्लिप्स ही यूज करते हैं. जस्ट हमको मॉडिफाई क्या करना है, हमारे जो स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल होता है वो. बट सबसे पहले एज यूजुअल एक्स एंड वाई वैल्यूज, और इसके लिए हमने जो एक्स एंड वाई वैल्यूज डिसाइड किए थे वो कुछ ऐसे थे. प्लस 100 minus mid y plus 50. Okay, so these are our x and y. Now start angle and end angle. As I said, it's a half eclipse निकालना है हमको. तो हमको start angle and end angle will be given from 0 to 180 degree. 0 to 180 degree, because that makes the half part of the circle, so half eclipse. Then as usual we have to give a so-called x radius and y radius. So let's give it to be 80 comma 60. Okay, so this is the part. Now I'll just save this part. Compile. So here is it. थोड़ा सा ऊपर आ गया. So आप ये नीचे कर सकते हो. And you saw the half eclipse how it came. So just थोड़ा सा to do it below, we have to just increase the value of so-called y. So yes. So here it is. We can just increase this part, and this is how your output should look like. So that is it. Now आप start angle और end angle के साथ खेल के देख सकते हो. यहाँ पे आप 0 किया है आपने, आप यहाँ पर अभी ऐसा था. So 180 करो यहाँ पर और देख लो क्या होता है. 180 to 240. So 180 to 240. Let's see what happens. If you see, the shape of the eclipse really changes. It is 180 to 240.
सो आप ऐसे इसके साथ खेल सकते हो, उनको आपको अलग अलग शेप्स मिलेंगे आपके इक्लिप्स से। ये कम्प्लीटली एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे सिर्फ इतना याद नहीं है कि सर्कल का एंगल कहाँ से बिगिन होता है और कहाँ पे खत्म होता है, and I'm seriously not interested in going back and studying maths. So you can play around with it, you can research and Google over it and try this part. CG के ये प्रैक्टिकल्स जो है थोड़े से शुरुआत के प्रैक्टिकल्स इंटरेस्टिंग है, सो आप ये ट्राई कर सकते हो, बाद में बहुत बोरिंग हो जाते हैं। So initial practicals are good, so you can give it a try to this particular part. Okay, so that is it for drawing the shapes. Now next part is also about drawing the shapes of something, so let's go after it and see what that practical is. I don't also exactly remember, but yeah, we'll check what it is and accordingly हम आगे बढ़ते हैं। सो ये पार्ट जो हमने था वो कंप्लीट किया। सो इसमें और एक पार्ट है, ओके, लेट मी टेल दैट पार्ट आल्सो। सो दैट इज इट। यहाँ पर हम कुछ चीजें थोड़ी सी अलग करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, कभी कभी ये मेरा वर्जन अलग है, ओके, ये मेरा वर्जन अलग है टर्बो सी का। नहीं तो एक चीज की जरूरत पड़ती थी हमको सी में, एक वो नाम है उसका CLR SCR, राइट। CLR SCR क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आता है उसको इरेज करता है और नया आउटपुट लेके आता है। अगर ये टर्म हम नहीं यूज करते हैं तो पुराना आउटपुट भी दिखाई देता है। द सेम प्रॉब्लम हमारा टर्बो सी और ग्राफिक्स के एलिमेंट्स के साथ भी है। ग्राफिक्स का जो आउटपुट आता है, अगर हम एक ऐसी टर्म है जिसको हम CLR की जगह पे यूज करते हैं, क्लियर डिवाइस, ये यूज करना जरूरी होता है, clear device. So this basically holds the output, the previous output that was there. So ये एक ऐसी टर्म है जो हम यहाँ पे init graph के नीचे डाल देते हैं। After initialization of the graph, we put it right here. Okay, so clear device is a term which we use instead of CLR SCR. It does the same job as CLR SCR. Just graphics के लिए एक अलग term है. So that is the CLR SCR which is there. Okay, so that is the part. Apart from this, वहां पे एक term था called as a set color. So set color, let's try to set some colors. Okay, let's try to set some colors. Set color is the term. ब्रैकेट में आप जो कलर देना चाहते हो वो आप दे दो। ओके, अभी मैंने रेड दिया है, आप देखोगे सारे के सारी चीजें रेड होने वाली है। अनडिफाइंड सिंबल रेड, व्हाई सो? फिर डिफाइंड सिंबल है क्या? वन मिनट। Okay. The colors that you give have to be in capital. My bad. So ये syntax है, ये याद रखना जरूरी है। Colors जो देने हैं वो आपको capital में देने होंगे। So that's a limitation that we have, but we have to work accordingly. आप देखोगे सब कुछ रेड हो गया। सो ऐसे आप कलर सेट कर सकते हो। हर बार जो कलर चाहिए वो आपको हर बार सेट करना पड़ेगा। लाइक अभी मैंने लाइंस के लिए कुछ रेड कलर सेट किया था, सो उसके बाद हम यहाँ पे सेट कलर येलो कर सकते हैं। Okay, so in the same way for rectangle we can have some another color. Then for eclipse some another color. So ऐसे जितने चाहिए आप कलर्स वहां पे सेट कर सकते हो। कितने कलर सपोर्टेड हैं वो मुझे भी नहीं पता है, बट yes, whatever is supported you can try.
Gray is not supported. I guess the basic colors only will be supported. So that is it. So everywhere you can find different colors. So before giving the instruction, you have to set the color, and accordingly it will set the color and take the instruction. So these are just the additional part, like just beautification part जो हम बोलते हैं उसमें ये आता है. बट ये कुछ functions है जो आपके functions के list में दिए गए हैं. So that is it. Now let's move to the next practical. Okay. नॉर्मली आई डोंट टारगेट स्टूडेंट्स दैट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर चीज बाय हार्ट करके आते हैं, सो दैट इज नॉट इजी. यहाँ पे अगर दूसरी चीज होती है कि आप यहाँ पे प्रिंट एफ वगैरह नहीं यूज कर सकते हो. ओके, दिस प्रिंट एफ डजंट वर्क ओवर देयर. व्हाट वर्क्स दैट वील सी, वी हैव दैट पर्टिकुलर पार्ट. हमारे यहाँ पे जो फंक्शंस है यहाँ पे भी इसमें दिया गया है. सो आई शो दैट पार्ट टू ऑल. कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ लिखना है तो yeah, it's given right here. ये out text xy, just the line function just below flood fill यहाँ पर दिया है. ये सेकंड पेज पे यहाँ पे कंटिन्यू होता है. सो ये जो सेट टेक्स्ट जस्टिफाई एंड सो ऑन, ये जो है ये टेक्स्ट फंक्शन है. बट इसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है कि आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, विच इज अनदर big thing. So that is the part. So we'll see also those functions which are there. This is an extensive list of functions which is available, and we have to do this particular part.